Hello and a very warm welcome to the brand new edition of Policy Watch. I'm Kriti Mishra. Today we'll analyze the Chiller Star labeling program. India has launched an ambitious program to encourage the deployment of energy-efficient chiller systems in the country. The Chiller Star labeling program has been formulated by Bureau of Energy Efficiency. It envisages providing star rating in terms of energy performance. Initially, the program has been launched on voluntary basis and will be valid up to December 31st, 2020. Chillers are extensively used for space conditioning of buildings and for industrial process cooling applications. And to know more about the topic, I'm joined by Mr. Abhay Bakre, Director General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Mr. Anil Rajdan, former Secretary, Ministry of Power, and Mr. Praful Pathak, President, Solar Energy Society of India. Welcome to Rajya Sabha Television, all of you. Mr. Bakre, let me commence the show with you. With the Chiller Star labeling program, it is estimated that more than 500 million units of electricity would be saved in the year 2019. Take us through the important highlights of this program. As we all know, for many years that for air conditioning purpose, we have been using mainly the unitary AC systems. That means the window air conditioner, the split AC and similar distributed air conditioning systems. But for larger premises like banks, offices, shopping malls, even large hotels or even metro systems, we have started using centralized air conditioning system. They are working on the principles of chilled water system, and these are larger units providing air conditioning for a slightly bigger space. Now they are more efficient in terms of or as against the utilization of unitary systems like window AC or split AC. But with the higher demand or growth of air-conditioned spaces in the coming years, it is necessary that these chiller units also should be given some kind of energy efficiency program or star labeling. So that's why Bureau started considering, and finally it was launched on 14th of September 2018 on the eve of World Ozone Day. Right, sir. But how would you encourage the deployment of energy efficient chiller equipment that has wide industrial use? Yeah, that's so far Bureau has been implementing the star labeling program. It started with very common household equipments like refrigerators, tube lights, then window ACs since 2009-10, and then thereafter many more equipments have been added: washing machine, color TV, transformers, motors, etc. Now, especially the equipments which are more used by the consumers, household consumers, the star labeling program has been quite popular, and so we observed that the consumers should be given a kind of information that how different equipments which are available in the market or which are manufactured and designed by different air conditioning vendors, how they are compared in terms of energy performance. Because not only the initial cost of the equipment is important, but at the same time these equipments which are used almost throughout the year, whether it's an office or a shopping mall or in a metro system, they should be energy efficient, so that on a long run the operating expense or the yearly energy bill should be optimized. So in that with that objective, we prepared this program that if a star rating is given based on their energy performance, so how is the difference between a star 1 or a star 4 or a star 5 equipment, so that the consumer can calculate that if he can purchase a 5-star or a 4-star centralized AC equipment or a chiller, commonly known as, how much electricity or energy bill he can save in a year or in a lifetime of say 5 years to 10 years. So energy efficiency is critical for the growth of this industry. Mr. Bakre, 2 decades, that's a fairly long journey. Have you taken all the stakeholders on board now? Yes. Most of the energy efficiency or energy consuming appliances have been covered in this program. We had extensive deliberations, discussions with the stakeholders, the consumers, and also that over the years the program has become quite popular. The consumers have realized that this is actually a better proposition to purchase energy efficient appliances rather than purchasing a low cost but inefficient appliance in their household, because they have to pay a large amount of energy bill throughout next 4 to 5 years or even more than that. So that way the consumers have responded very well.
The manufacturers have responded very well because now they are coming out with better technology, more efficient appliances for the consumer. So it's a win-win situation for the consumer as well as for the vendors, that the energy efficiency is improving in the market and the markets are getting transformed. So it's a win-win situation for all. Yeah. But talking about environmental benefits now, Mr. Bakri, what are the advantages to the manufacturers if they achieve, say, a 5-star label? Yeah, first thing is that being a 5-star equipment and the way the consumers have responded well, and now the consumers believe that going for a 4-star or 5-star equipment is more beneficial than purchasing a low-cost equipment. So manufacturers always try to come out with the good models, high-selling model, and they try to promote such products so that the consumers are also attracted. So in that way, this policy or this program, which has been well received by the consumers, give encouragement to the manufacturers to come out much better equipment and better technology. And now recently, last year in 2018, the inverter AC has been made mandatory. It is again a remarkable step, because right now when the about 8% of India's population, 6 to 8%, they are using household air conditioners, which is expected to grow, say, up to 20% in coming 10 to 12 years. In that way, the manufacturers are quite excited. They are trying to come out with better technology for inverter ACs, and the sale of inverter AC has increased, which are very high efficient and save a lot of energy bill for the consumers. So that way, the manufacturers are quite excited and they come out with better models in the market every season. And there's another dimension, and that is of registration. How do you plan to provide a seamless process of registration for the manufacturers? Yeah, that's a really good question. That we have done a lot of consultation, and finally the entire process has been made online. There is no now hassle or etc. There is no papers involved. Everything has been made online. Any difficulty which is faced by the manufacturer, sometimes they believe that the test reports they are submitting, because there is no new test required depending on their product test, which is done as per the standards of BIS or any other stream, and from the recognized laboratory they can upload, and within a month or even less than that, we are able to give the registration, and they can immediately use the star label. So the entire process has been made very easy and very user friendly for the registered vendors. So the entire process has been simplified, it is online and it is user friendly. Mr. Bakri, last 30 seconds to you. Yeah. Right now this program has been launched on a voluntary basis. Yes. Do you plan to make it mandatory in the near future? See, the programs are made mandatory depending on the response and depending on the technology available. But the two messages we want to convey is that from this program, that as Mr. Rajan has said, the energy conservation building codes have been launched for residential as well as commercial buildings. So in coming years, the next 10 years, the commercial buildings will be constructed, if they are constructed, so that the insulation itself is very efficient, so that they can reduce the capacity. And over and above, if these chiller and the other related equipments on space conditioning, where the total demand is going to be more than 5 times from now onwards, can be optimized, or more efficient equipments are used, so that this demand can come down from 5 times to 3 times in terms of energy. So in that process, the response from consumers, the authorities who will be purchasing this equipment is quite vital, and that will tell us, or that will make us to decide whether in future we should take it to voluntary system or we can convert into mandatory one. So efficiency is the key. On that note, gentlemen, thank you so much for joining us. It is important to optimize energy performance of chillers. So that's all we had for you in this edition of Policy Watch. Thanks for watching and stay tuned to Rajya Sabha Television. क्या आपके घर का बिजली बिल ज्यादा आता है? हो सकता है कि आपका घर ही ज्यादा बिजली खा रहा हो, तो बल्ब बदलने, टीवी, फ्रिज बदलने से पहले आप पूरा का पूरा घर ही बदल डालो और ऐसा घर बनाओ जो बिजली बचाए। ऐसे घर बनाए जा सकते हैं जो बिजली की खपत घटा दें। पंखे बदल दिए, ट्यूबलाइट्स बदल दी, एसी फ्रिज भी नया खरीद लिया, लेकिन तब भी बिजली का बिल नहीं घटे तो क्या घर ही बदल दे? तो जवाब हाँ है, चौंकिए नहीं।
ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी संस्था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बताए तरीके आपके घरों को इतना स्मार्ट बना देंगे कि भारी भरकम बिल से आपको आजादी मिल जाएगी। और तो और, अगर कोई नया स्मार्ट घर खरीदेगा तो होम लोन पर ब्याज में छूट भी दिलवा सकता है। हमने इसका एक छोटा सॉफ्टवेयर, एक पोर्टल बना दिया है। इसका नाम भी हमने इको निवास कह दिया है। उस पोर्टल में आप खुद जा सकते हैं। कोई भी एक जिसको नॉर्मल कंप्यूटर का पोर्टल विजिट करना आता है, उसके पास वो वेबसाइट है। आप अपना घर चॉइस करिए, कितने बेडरूम, कैसा स्लैब, कितनी हाइट, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और आप जैसे जैसे आप उसको करेंगे, आपको वहाँ पे रिकमेंडेशन आप देखेंगे, उसमें बगल में आता रहेगा कि आपने जो घर बनाया है वो 20% बिजली बचा रहा है, 35 बता रहा है। यदि आपसे कोई हाउसिंग लोन लेता है तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि यदि वो एनर्जी एफिशिएंट होम बना रहा है जो मिनिमम 20% हो, एफिशिएंट हो, तो आप उसको किसी तरह का लोन में छूट दीजिए या कुछ इंटरेस्ट कम कर दिए। घर को बनाते वक्त या घर बनने के बाद भी अगर कुछ कायदों का ध्यान रखा जाए तो घर बिजली बचाने लगता है। एक्सपर्ट से समझिए कि ऐसे घर कैसे बनाएं। एक डीडीए का एक हाउसिंग प्लान है, हाउसिंग सोसाइटी है। इसमें ये घर बने हुए थे पुराने। अगर हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन के समय रूफ में अगर हम लोग देते हैं, इंसुलेशन देते हैं 50 mm का या 100 mm का, तो देखिए उससे सेविंग होती कम से कम आपकी 10% की। जो हीट अंदर आ रही है वो हीट नहीं आती। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये हमारा घर जो है ईस्ट फेसिंग है। ईस्ट फेसिंग होने के नाते धूप अभी सारा इस पे आ रहा है। अब धूप जब आ रहा है तो वहाँ पे वॉल में अगर इंसुलेशन होगा हमारा तो हीट अंदर नहीं जाएगी। हीट अंदर नहीं जाएगी तो आपका एसी का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आपको अंदर कंफर्ट फील करेंगे। ये दो काम हो गया। तीसरा आपका देखिए आपका विंडोज है। विंडो में यहाँ सबसे अच्छा काम एक हो रखा है कि शेडिंग है इसके ऊपर, और शेडिंग इसकी हाफ शेडिंग है। अगर ये शेडिंग और बड़ी होगी तो आपका जो शेडो है वो अंदर नहीं जाएगा, जो धूप है अंदर नहीं जाएगा शेडो के कारण, और उस कारण से आपकी सेविंग्स वहाँ पे होगी। तो ये आपकी 20% सेविंग्स के आसपास पहुँचा देती है। दूसरी बात, दो चीज़ें इसमें ध्यान रखें। इसमें जो विंडोज लगी हुई है ये छोटे विंडोज हैं, मीडियम स्मॉल रेटिंग की विंडोज है। इस विंडो से आपकी लाइट अधिक नहीं जा रही है। तो यहाँ विंडो बड़े का होते तो आपका लाइट भी जाता, और उस विंडो में अगर डबल ग्लास लगता तो आपकी सेविंग्स उसके थ्रू भी होती है। मतलब थर्मल भी अंदर नहीं जाता, लाइट भी अंदर जाती, दोनों चीज़ें काम होते हैं। अगर आप हाल फिलहाल में वॉशिंग मशीन या माइक्रोवेव ओवन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उसकी स्टार रेटिंग जरूर परख लीजिएगा। सरकार ने फ्रिज की तरह वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव पर भी स्टार रेटिंग लेवलिंग का इंतजाम कर दिया है। सरकार का दावा है कि 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन में 25 से 30% तक बिजली की कम खपत होगी और 20 से 25% तक कम पानी खर्च होगा। फिलहाल इसे 6 से 12 महीने के लिए वैकल्पिक तौर पर यानी ऑप्शनल तौर पर लागू किया गया है। बाद में इसे अनिवार्य यानी जरूरी कर दिया जाएगा। वॉशिंग मशीन के लिए काफ़ी ये फीडबैक आया था कि जब अलग अलग तरह के मॉडल टॉप लोडिंग, फ्रंट लोडिंग इस तरह के आने लग गए, और इसमें एक वाटर यूज़ भी एक बड़ा रिसोर्स आने लगा हाउस होल्ड के लिए, तो सभी टेक्निकल कमेटी ने ये कहा कि इसको होल्ड पे रख के इसका नया क्राइटेरिया बनाते हैं। और करीब 2-2.5 साल की रिगरस एफर्ट के बाद में टेक्निकल पैरामीटर निकल के आए, जिसमें हमने 2 क्राइटेरिया रखा। एक वाटर एफिशिएंसी, उससे रिलेटेड जितने पैरामीटर है, जब उसको मीट करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके बेसिस पे स्टार लेवलिंग दिया जाता है। ये IEC 60456 के हिसाब से है, जिसमें कैसे एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर एफिशिएंसी मेजर की जाती है, उसके बेसिस पे और उसके टेस्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनको स्टार रेटिंग दी जाएगी। ओके, सो अगर हम वॉशिंग मशीन की बात करें तो जो मार्केट में अभी अवेलेबल वॉशिंग मशीन अलग अलग कंपनीज की, वो उसकी तुलना में कितना एफिशिएंट होगा? देखिए, मार्केट में तो डिफरेंट मॉडल्स आज भी अवेलेबल हैं, और क्योंकि ये वॉलेंट्री लेबलिंग है, अभी हम इसको मैंडेटरी नहीं करेंगे शुरू में, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम एज पर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट हम पहले वॉलेंट्री चलाते ताकि वेंडर और कंज्यूमर का प्रेफरेंस आ जाए, उनसे फीडबैक आ जाए और एक तरह से मार्केट ट्रांसफॉर्म होने लगे। तो आज भी कुछ वॉशिंग मशीन हो सकती है जिनकी एफिशिएंसी अच्छी हो, कुछ मॉडल्स और कुछ ब्रांड्स हो सकते हैं, और जो तुरंत अब रजिस्टर करना चाहेंगे तो इसकी यही पहचान होगी कि आज जो आपने बिल्कुल सही कहा, आज जो रिटेल शॉप में अवेलेबल मॉडल्स
मॉडल्स, उसमें एक कंज्यूमर को ये नहीं पता लग सकता कि कौन सा एफिशिएंट है कौन सा नहीं, एक लेमैन को। लेकिन स्टार लेवल के द्वारा जब ये सभी मॉडल रजिस्टर होंगे, अपने ब्रांड कोशिश करेंगे, तो उसमें अपने आप डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन वाटर ज़्यादा एफिशिएंट है।